ಇಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಹೊರಭಾಗದ ಶಿಲಾಮಂಟಪದ ಪ್ರಾಕಾರದ ಶಿಲಾಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಕರು, ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಯಾವ ಸುವರ್ಣ ಕವಚದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಸುವರ್ಣ ಕವಚದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸದೆ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಅವರೇ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಾಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹುಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಯಾವ ಸುವರ್ಣ ಕವಚವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ, ಭಕ್ತರ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗದ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಸ್ತುರೂಪವಾಗಿ ಇದು ರೂಪವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ఇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ఈరోజు నుండి రాఘవేంద్ర స్వాముల వారి బయట శిలామంటప ప్రాకారానికి ఈ బంగారు తాపడం కవచ నిర్మాణం అనేటువంటిది కార్యక్రమం ప్రారంభం కానున్నది. శ్రీమఠం నుండి ఒక్క రూపాయి కూడా దీనికి వెచ్చించకుండా భక్తులే స్వయాన స్వయిచ్ఛతో రాఘవేంద్ర స్వామి వారి ప్రేరణతో దీన్ని చేయించాలి అనేటువంటి ఒక సంకల్పం చేశారు అందరూ. అందువలన నేటి నుండి సాంకేతికంగా ఈ పూజలను ప్రారంభించి ఇంకా ఈ కార్యక్రమం అనేటువంటిది జరుగుతూ వెళుతుంది. దాదాపుగా ఇంకొక నెలన్నర 2 నెలల్లో ముందు భాగంలో సంపూర్ణమవుతుంది. ఆరాధనా సందర్భంలో ఈ ఇంకొక భాగంలో పూర్ణం కావచ్చు అని మేము భావిస్తున్నాము. దీనిని బెంగళూరు శిల్పి మన శ్రీనివాస్ అనే వారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు. దీనికి కావలసినటువంటి రాగి రేకులను దాదాపుగా 6000 కేజీల రాగి రేకులను శంకర్ ఎలక్ట్రికల్స్ బెంగళూరు అనేటువంటి వారు అయోధ్యలో ఎవరైతే విద్యుత్ దీపాలంకరణ చేశారో వారు సేవారూపంగా ఈ దీనికి సరిపడేటువంటి రాగి రేకులను అంతటా కూడా వాళ్ళు సమర్పించారు. వారికి వారి కుటుంబానికి కూడా శ్రేయస్సు కావాలని రాఘవేంద్ర స్వామి వారిని ప్రార్థిస్తున్నాం. आज से हमारा बाहर जो शिला मंडप प्राकार है उसको ये सोना से पूरा कवच बनाने को हम शुरू कर रहा है. भक्त लोग स्वेच्छा और भगवान का कृपा और आशीर्वाद से, उनका प्रेरणा से उन लोग ये काम सेवा रूप से कर रहा है. இன்னிலிருந்து நம்ம மந்திராலய க்ஷேத்திரத்தில் வெளியில இருக்கிற சிலா மண்டப பிராகாரத்துக்கு இந்த தங்கத்தை கவச்சம் போடுறது ஒரு வேலை ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கோம். பக்தாள் அவளுடைய இச்சை மூலமாகி பகவானுடைய ஆசீர்வாதத்தினால இந்த காரியக்கிரமத்தில் ஒவ்வொரு தனித்தனியாகி அவர் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ நல்லதாகணும்னு நாங்கள் சுவாமி திருಪಾದத்தில் வேண்டிக்கிறோம். இந்த ಇವತ್ತಿನ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶುಭ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಶ್ರೀಪಾದ ಪುತ್ರರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಳು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರು, ಭಕ್ತರು, ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ವಂಶಿಕರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಗಳ ಶಿಲಾಮಂಟಪದ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರವರೇ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗುರುಮುಖೇನ ಆಚಾರ್ಯಮುಖೇನ ಕಾರಯಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಕವಚಾಂತರ್ಗತ ಕಾರ್ತಿಮುಖ ಪ್ರಾಣಾಂತರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವತಾ ನಮಃ. ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನೋಪ್ಯಾಮಿ ಅವಾಯಾಮಿ ಆತ್ಮೋಪ್ಯಾಮಿ ಆಧಾರತ್ವಯ ಮಾಧ್ಯಮಾತ್ಮೋಪ್ಯಾಮಿ ಅಂತ್ಯಾತ್ಮೋಪ್ಯಾಮಿ ಆಚರಣೋಪ್ಯಾಮಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಸ್ನಾನೋಪ್ಯಾಮಿ ಅನಾಥ ವಸತೋಪ್ಯಾಮಿ ಸುರಭಾತ್ಯಕ್ಷರೋಪ್ಯಾಮಿ ಶರಣೋಪ್ಯಾಮಿ ಕೇಶವಾಯ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಮಾಧವನ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಯುಕ್ತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥೇ ಜಲಕಮೀಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.